वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव किरण। तो आज हम लोग घूमने चल रहे हैं मंडोर गार्डन। जी हाँ, मंडोर गार्डन, और उसे कहते हैं रावण का ससुराल। तो चलो मैं आपको आज रावण का ससुराल लेके चलती हूँ। तो अपन चलते हैं मंडोर गार्डन। चलो बेटू। तो हम मंडोर जाने के रास्ते में चल रहे हैं और ये देखिए मैं आपको क्या दिखाती हूँ। ये है शुगर मिल। अगर हम इसे मारवाड़ी लैंग्वेज में कहें तो ये है दारू गोदाम। तो किसे दारू पीना है भाई, जो इसको भी पीना है वो रास्ते में आइए और दारू पी लीजिए। बहुत ही सस्ता है। ये देखो सुबह 8 बजे खुलेगा। चलो, ये है मंडोर का गेट और यहाँ की लाइट देखिए आप लोग। बहुत ज़्यादा रस है आज तो। ये देखो नाइट व्यू है मंडोर का। यहाँ इतना रश होता है। इधर देखिए आप। ये देखिए लाइट्स। पहले यहाँ एकदम सूखा सूखा रहता था। अब देखिए लाइट्स, डेकोरेशन देखिए आप इसका। तो हम लोग एंटर हो चुके हैं मंडोर के अंदर। हम लोगों ने टिकट लिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा चलता है। हमारे वो घर वाले ही बैठे हैं अंदर क्योंकि ये हमारे घर का ही गार्डन है। तो हमें फ्री में एंट्री मिल गई है। अदरवाइज हमारे खाते में ही है। हाँ, और ये हमसे लेंगे। हमारा भाई बैठा है उधर, तो वो घर जाने के बाद हमसे ज़रूर वापस लेगा। तब तक हम लोग फ्री में घूम लेते हैं। मैं 10 लूंगी गणपति का नेट पे सही है। और फोटो लेने को खींच देने को हद नहीं है। देखो घूमने तो ऐसे आना चाहिए। कविता जी थोड़ा पीछे हुई है। ये देखिए एकदम झमाझम। नहीं, हम तो क्या घूमना है, घर से उठ के आ गए हैं हम लोग तो ऐसे ही। क्या बताऊं? थोड़ा मेकअप करके आइए, थोड़े गहने वहने डाल के आइए। अरे गाइस मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे अभी हम टॉय ट्रेन में बैठेंगे जो कि रुक। यहाँ खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए, अगर आप थक गए हैं तो आप नींबू पानी ले लीजिए। आगे चलते हैं अपन। वाह, जो जानवरों की जो आवाज होती है वो नेचुरल सुनने का मजा ही कुछ और है। ये देखिए, ये देखिए वहाँ मंकी सो रहे हैं ऊपर। अगर आपको दिख रहा है तो आप देखिए, वो देखिए मंकी बैठे हैं ऊपर। तो आपकी आंखों का एंगल सही करवाइए। ये देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए हमारी कितने बुरे किस्मत है। हम आए और लाइट चली गई। वो लेजर शो के लिए शायद लाइट ऑफ हो गई है। फिर पता नहीं क्या है। बेटा बहुत खुश है मंडोर आके। ये देखिए बेटा, हाई कर दो सारे फ्रेंड्स को, हाई कर दो। निशिराज, निशिराज हाई कर दो। ये लाइट शो उधर हो रहा है एक कोने में, जो कि दिख नहीं रहा है इधर से। गाइस अपन को यूं चलना पड़ेगा। मम्मी यहाँ से गाड़ी में, वहाँ से सीधा। वो देखो लाइट स्टार्ट हो चुका है। उधर लेजर लाइट शो स्टार्ट हो चुका है। अरे भाई मंकी आया। थोड़ा हमें मंकी से डर लग रहा है। ये देखो, फिर भी हम छाती ठोक के घुस गए मंडोर में। हाँ क्या करे, बालाजी महाराज है। बालाजी महाराज ये एक बात सही नहीं लगी कि लेजर शो हो रहा है तो पूरे गार्डन की लाइट्स ऑफ कर। पूरी गार्डन की अब लाइट। इसमें देखो पता ही नहीं चल रहा कौन आ रहा है कौन जा तो रहा है। गाइस मैं जब पहले भी आई थी यहाँ पे मेरे चाचू के साथ, और आप दिख ही नहीं रहे हो मिस्टी। तो गाइस यहाँ पे वही जो वही हुआ था। अब इसमें मैं आपको क्या दिखाऊं। ये है अजीत पोल। भूल ही गई थी मेरे खुद के कैमरे में लाइट है। वाह, क्या शानदार बात हुई। तो ये मेरी बेटी लहराते हुए चल रही है। निशिराज कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक है। बेटा ये झमझम कौन जो भी बजाता है ना।
अंदर चलो अंदर चलो। तो हम आ गए हैं भैरू जी मंदिर, जो कि है काले और गोरे भैरू जी। उनके दर्शन करने चल जाते हैं पहले, फिर लेजर शो के लिए चलेंगे। ये मेरी निशी खुश हो रहा है। चलो निशी राज। और गाइस 10-10 मिनट से लेजर शो बंद हो जाएगा, एक एपिसोड। ओके भाई। अच्छा आराम से। तो आप तो हाँ, तो आपको पहले आना चाहिए था। गाइड को पहले आना चाहिए था, अब बता रहे हो आप। लाइट लगी बहुत अच्छी वाली था। और इंग्लिश में तो खत्म कर देंगे। ये है मंदिर, आपको भैरू जी के दर्शन करवाते हैं। ये है गोरा भैरू जी, उधर है काला भैरू जी। मेरी बेटी को लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसके मैं ये छाप लगाती हूँ। पता नहीं क्या बना है, फेस खराब हो गया। ओहो। निशी जय जय करो। सब मंदिर के अंदर खड़े हैं। ये फ्रेंड्स आपसे मोटे लग रहे हैं, है ना? हमें मोटी लग रही है। मेरे इधर बेस्ट है, और ये हमारे इधर गिर जाएगा ये पुजारी जी हैं, ये भी मेरे दोस्त हैं। पुजारी जी भी मेरे दोस्त हैं। हेलो हाय। तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमको हमारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं। इधर ये है जोत। तो ये मेरी बेटी थक चुकी है तो रेस्ट कर रही है। यहाँ पे पेट पूजा हो रही है। और यहाँ पे इनकी पेट पूजा हो रही है, मेरी ननंद बाईसा की। और वो उधर भैरू जी, काले गोरे भैरू जी जिम रहे हैं। ये जो बैक साइड में आप देख रहे हैं, उधर है मंडोर का म्यूज़ियम। तो वो हम कभी जब फ्री होंगे तब आपको ज़रूर दिखाने के लिए लेके जाएंगे। आज तक के लिए यहीं के ही दर्शन कर लेते हैं। तो ये कचरा गाड़ी जा रही है। किसको झूले खाना है इसमें? एनीबडी वांट्स झूला? बैठना है किसी को? नहीं बैठना है। तो अब हम उधर चलते हैं जहाँ लेजर शो हो रहा है। राजस्थान में फर्स्ट लेजर शो, 3D शो, है ना? टॉय ट्रेन। पहले स्टॉप होता है यहाँ का, ये देखिए, ये देखिए आप। अभी आज हम इसमें राइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लेट हैं। और गाड़ी देखिए, पूरी गाड़ी एकदम फुल है। अपन चलते ना उस साइड में जल्दी, तो उसको बट्टी नाला नहीं क्यों? निसिन पहले के घूमना है, जब सॉन्ग बैठ जाओ। सेकंड स्टॉप तो हम लोग लेजर शो के लिए भी एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे भी हमने टिकट नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे भी हमारे भैया बैठे हैं अंदर। तो ये फ़ायदा है, भाई बहन हो तो आप उनका नाम लो और अंदर आ जाओ। तो हम तो कंजूस हैं, टिकट के पैसे बचा रहे हैं। टिकट ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपये है। हाँ 10 रुपये का तो हम गुटखा खा जाते हैं। पर क्या करें, आज बस मस्ती करनी है तो बस हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो ये देखिए लेजर शो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देखना कहाँ है? यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। ये सब प्रोजेक्टर है, इससे 3D लाइट शो होगा।
तो हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं देखने के लिए। The 15th century was an important time when the powers that reshaped the future were emerging. Lodi dynasty took over the throne of Delhi. Babur was born in Central Asia. And pride of Rathors, Raj Jodhaji founded the city of Jodhpur by laying the foundation of Mehrankar Fort. Mehrankar, built in 1459 AD, was witness and center of major political activities in North India. The emergence and rise of the Rathore dynasty in Jodhpur was from Mandore only. In the northwest direction of Mehrankar, after traveling for about 9 kilometers, I will welcome you with the remains of my fort. I am the fort of Mandore. I am so ancient that I do not even remember who built me or when was I built. Even today, coins of the past, temple remains, archways, pillars, and exquisite sculptures continue to be found from Mandore. All the symbols of ancient India have been preserved in the Mandore Museum, just as I have preserved many tales in my dilapidated remains. The city of Mandore, surrounded by the hills of Aravali and the worship land of sage Mandavya, was also known as Mandoregarden. The Nagavanshis ruled here during the Mahabharata period, after which the Gupta dynasty ruled it using their muscle power. During 4th and 6th century, the Huns arrived and the Paramaras increased their splendor. Marwar expanded most during the Parma period, and that time Marwar was also called Navakoti Marwar. While the Pratiharas established their empire and increased its opulence in the 7th century, come with me in that bygone era when swords used to blaze here. The battlefields would vibrate with the sound of drums. The brave hearts would bellow, and the sky reverberated with the shouts of the Runbakers. In 1394 AD, the power of the Pariharas was fading. Subedar Zafar Khan of Gujarat had taken Mandore and Nagaur under his control due to the weak Sultanate of Delhi. My boundaries were taken over by Turks instead of Parihars. Eba Khan, the Hakim of Zafar Khan, was the commander of Mandore Fort, who used to display his cruelty every day. The victim farmers approached for help to the head of Inda Parihar of Mandore, Veer Rao Hema Gehlot. Now, Hemaji, these Turks collect arbitrary rent from us. Every day they steal our cows and now ask for carts laden with hay for their horses. We will be ruined if this continues to happen. So arrogant of his power that he is trying it on the poor farmers? I swear on Bairoji, Eba Khan will no longer be alive to commit any more atrocities.
to fight the mighty enemy. A plan was made to attack using force and intelligence. Several hundred carts of grass were prepared, and the warriors hid themselves with weapons under the grass. As soon as the carts reached inside the fort, the Kshatriyas raised slogans. Turks did not even get a chance to recover from this sudden attack. When the majestic swords of brave Hema Gehlot, Sama Shur Rab Chunda Rathor, and the heroes of Marwar waved, the heads of the enemies were piled up. In memory of this victory, Rao Mahotsav is still celebrated in Mandore. Every year, on the second day of Holi, the fearless, courageous Hema Gehlot and all the brave are remembered. Baba Bhaironath Ji is worshipped, with whose blessings Veer was victorious. Even after the Mandore conquest, Inda Parihar remained worried because the city was surrounded by enemies. And then he decided to hand over the kingdom to the powerful Rathor dynasty. Rai Dhaval, the head of Inda, got his daughter married to Rao Chunda and gave away Mandore fort as dowry. Rao Hema Gehlot crowned Rao Chunda, and Bhaton sang the anthem of Mangal. Showing his skill and tactical acumen, Rao Chunda expanded his empire and made Mandore the capital of Marwar. Rao Chunda attained the martyrdom in the Battle of Nagaur in 1423 AD, and his son Ghana, Rao Ranmal, took over. There were close relations between Marwar and Mewar, but the sycophantic Mewar king, Rana Kumbha, started making false rumors. Rana, I do not like Rao Ranmal's intentions. He wants to grab your kingdom. They just consider one side and just not bother about the other one. A sweet relationship was being poisoned with doubt and distrust. In 1438 AD, Rav Ranmal and his son Jodha were in the fort of Chittor. Ranmal realized some conspiracy and sent his son Jodha out of the fort. Following his father's orders, Jodha reached the foothills of Chittorgarh. Then a dome caught the attention of Jodha, who was singing a couplet. On the instructions of Rana Kumbha, Jodha killed Rav Ranmal. Taking a vow to avenge his father's murder, the young Jodha marched towards Marwar, but Jodha continued to follow him. He was the uncle of Rana Kumbha and the old enemy of Marwar. The
vast army of Mandore was after Jodha's life, and the young Jodha was fighting them along with his 700 loyal fighters after fighting against all odds. When Jodha reached Mandore, he was left with only 7 soldiers. But Jodha reached here too. Search every corner of Mandore fort. Ranmal had killed my brother Raghavdev. I will destroy his entire family and descendants. इसका बड़ा बाबा है Huzur, Jodha has run towards Janglo region. वो देख सामने If देख you order, we will chase him. Let it be. He will die wandering in the sand dunes. You send a message to Rana Kumbha. Now, we will rule Mandore. वो हॉर्स आया After the उधर देख ruthless सामने हॉर्स आया murder of his father and humiliation of losing the kingdom, Jodha was wandering in pain with a heavy heart. The enemy was in ambush, but the fighting Jodha did not lose hope and faith. After 15 years of struggle and tireless efforts, Jodha finally overcame adversity and hardship. Jodha had died, and I was reconquered by Rav Jodha. Times were changing, and the country was under the threat of foreign invaders. In such a situation, instead of fighting with each other, Marvar and Mevar made a treaty. But the visionary Rav Jodha was getting worried, and the reason for that concern was me. That is, the fort of Mandore. What are you thinking, Rauji? Just take a look around. What do you see? Sky, forest, hills. These hills are the cause of my concern. Several hundred years ago, these were very high, and it was difficult to reach the fort. But heavy rains and dust storms have reduced their stature. Rav Jodha's words were painful, but true. I too had become old and weak, so Mehrankar was built, and I was left abandoned, and it was the right decision. When the Mughals arrived in India, the Rathore dynasty took them head-on and kept fighting without giving up. The history of Jodhpur is full of inspirational and heroic stories. All those immortal heroes, through their sacrifice and patriotism, have made Jodhpur shine. The warrior born here was strong enough to defend their nation. Their patronage ensured the happiness and prosperity of their subjects. Only few individuals are aware that delicate feelings can also be found within tough warriors. These sword-wielding soldiers who adhered to the royal faith also loved invention and the arts, which are still practiced today and add to the splendor of this region. Maharaja Ajit Singh Ji is remembered for his creative Aniska. energy and magnificent architecture. अनिष्का He built Sal for the deities, Aero, and a palace called Thamba, and renovated Nehru Bawri and Nehru Temple. He also got a grand cenotaph constructed in memory of his father, Maharaja Jaswant Singh Ji, whose decoration of huge pillars and sanctum sanctorum is exemplary.
The view of the Sabha Mandap gives a clear view of the mythological tales. The gestures engraved on the stones are the best examples of craftsmanship. Maharaja Jaswant Singh Ji II paid special attention to make Mandore beautiful. He planted more than 100 species of trees in Mandore Garden, which adds to the beauty and lends importance to the park. In 1896-80, Maharaja Sardar Singh Ji further decorated the garden of Mandore. नहीं देवांग भैया ले गया Between 1923 and 1947, तो during वो the थोड़ा time सा of इतना सा Maharaja हमारे डाल Umayad दो। Singh, इनमें several डाल। steps were taken to इसमें modernize the Mandore garden, such as the restoration of Nagadadi Canal, the development of beautiful gardens near the cenotaphs and palaces. Along with this, the boundary wall and the main gates were constructed. Rav Gangaji said, Ram to Gitara, ya Bhitara Surave. Humanity's fame has remained immortal for centuries through the creation of literature or great architectural works. The Rathore dynasty will be remembered for its bravery and architecture. The wonderful sculptures made on the plinth and cenotaphs located in Mandore are a unique example of craftsmanship. From the most powerful king, Ram Maldev Ji of Marwar, to Maharaja Ajit Singh Ji's cenotaph, the impression of beautiful carvings and unmatched architecture is even visible today. The construction of Maharaja Ajit Singh Ji's cenotaph was started by his son, Maharaja Abhay Singh Ji in 1793. But it was completed by his great-grandson, Maharaja Bhim Singh Ji in 1856. It is not only the most exquisite cenotaph in all of Rajasthan, but preserves its artistic integrity and is an excellent illustration of the period's craftsmanship. This cenotaph highlights the significance of Shaivism with its 4 magnificent gates and 4 Sabha Mandapas. After independence, many development works were done here, and in 1968, a museum was established here, inside the palaces. The example of the brave and loyal people born here will last for ages. When a huge crowd gathers here on Veerpuri and Nag Panchami, then even today, the relationship comes alive. Seeing the love and reverence in their eyes, the heart is filled with emotion. The ties of centuries are unbreakable even today. I have been destroyed by the storm of time. But it is the duty of this generation to take care of the cenotaphs, temples, parasols, and gardens of Mandore. कैमल As आया a देखो उधर witness, कैमल आया कैमल Mandore folk सामने देखो is कैमल आया singing with pride about all the brave hearts, their dignity and splendor. खाड़ा में ये देखो पानी है इधर। ये दिन में आते तो आपको फाउंटेन देखने का मौका मिलता। आपकी क्या गलती, आए तो हम हैं दिन रात में। ये देखो मेंढक बोल रहे हैं, नहीं मेंढक नहीं है कुछ और है। ये बैठे भैरू जी, गोरा भैरू जी। जो कि पूरी भर चुकी है। हमें इसमें सीटिंग मिलेगी या नहीं, इसका हम वेट करते हैं। मैं बैठ चुकी है।
मीचू फर्स्ट टाइम ट्रेन को एंजॉय करेंगे, है ना मीचू? हाँ ये देखिए ट्रेन पीछे बहुत लंबी है। फाइनली हम हमारी ट्रेन चालू हो रही है, चालू और हो गाइस रही है। फाइनली हमें जाना है दूर में पहले कहाँ से ये बीच का है। ऐसी ये अंकल जी पीछे क्यों देख रहे हैं? खुद को डर है क्या गिरा देंगे? अभी और नीचे जाना है, क्यों लैंड करना है? आ गए क्या वापस? तो हमने झूला खा लिया है ट्रेन में, तो हम नीचे उतरते हैं। जाओ बजा। ये ट्रेन का सफ़र अच्छा लगा हो तो घंटी बजाएं। पहले घंटी बजाओ, ट्रेन का सफ़र अच्छा लगा है तो घंटी बजाओ। तो ये था हमारे ट्रेन सफ़र जो कि हम लोगों ने एंजॉय कर लिया है। क्या हो गया?